Now let's move to exercise 12.1. So the question number 1, it says there are 20 girls and 15 boys in a class. What is the ratio of number of girls to the number of boys? यानी कि अगर एक क्लास में गर्ल्स कितने हैं 20 और बॉयज हैं 15. ठीक है, सो रेशियो हमें निकालना है गर्ल्स टू बॉयज, यानी कि गर्ल्स ऊपर और बॉयज नीचे आएंगे एज अ फ्रैक्शन. ठीक है, तो गर्ल्स कितने हैं 20 और डिवाइड कीजिए 15 से, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट विल बिकम 4/3. 5 की टेबल से कट करेंगे, तो द रेशियो इज गर्ल्स टू बॉयज की 4:3 इज द आंसर है. ठीक है, so this is the A part. Now let's move to the B part. What is the ratio of the number of girls to the total number of students in a class? ठीक है, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, कितने होगा गर्ल्स प्लस बॉयज. तो गर्ल्स प्लस बॉयज की स्ट्रेंथ क्या है 20 + 15, सो दिस इज 35. तो अब आपको ये पता चल गया. सो नाउ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स. ठीक है, टोटल. So this is 20/35. So again, reduce it to the lowest terms. This is 4/7. So this ratio is 4/4:7. Right? So this is question number 1. Now move to the question number 2. So this is out of the 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. ठीक है, so there is one class जहाँ पे total students जो हैं वहाँ पर 30 हैं. ठीक है, ठीक है, उसमें से 6 जो हैं वो फुटबॉल को लाइक करते हैं, बाकी 12 जो हैं दे लाइक क्रिकेट एंड द रिमेनिंग लाइक टेनिस. ओके, सो द रिमेनिंग वंस कैसे आप निकालोगे, यानी कि 30 में से 6 माइनस करो और 12 माइनस करो, उतने टेनिस वाले बच्चे आ जाएंगे. तो ये आएगा हमारा 12. अब आप इसको प्लस करेंगे तो ये टोटल 30 बनना चाहिए टोटल स्टूडेंट. ठीक है, चेक है, दैट्स अ चेक पॉइंट. ओके, सो अब आपको पता चल गया यहाँ पर the football is 6, cricket is 12, and tennis is 12. Okay, now let's read the question further. So the number of students liking football to the number of students liking tennis. So football by tennis का ratio हमें चाहिए. ठीक है, the next one says the number of students liking cricket to the total number. Total चाहिए. ठीक है, so now football is 6 and the tennis are 12. So this is 1/2. You can write it as 1:2 also. Fine. So football is to tennis. This is the answer. Then cricket. So this is 12 and the total number are 30. So just divide this and I'm going to get as 10 and 4 further to be reduced. This will be 2:5. So this is the question number 2. This is question number 3 and it says that see the figure and find the ratios of the number of triangles to the number of circles inside a rectangle. Okay, so आपको ये फिगर देखना है. Says number of triangles, ट्रायंगल की रेशियो निकालनी है. Number of triangles divided by number of circles. Okay, now what we have to do, we just have to count. So how many triangles are here? 1, 2 and 3. So there are 3 triangles. I'm going to write 3 and circles are 2. So this is just 3:2. Okay, this is E. The next one is B. The number of squares, how many squares are there? 1 and 2. So number of squares to total number of figures inside a rectangle. इस पूरे rectangle में कितने figures हैं? 1 2 3 4 5 6 7. So यहाँ पे हैं 7 और square कितने हैं हमारे पास? Just 2. So this is gonna be my answer 2:7. Now the C part, it says number of circles. So number of circles divide by total number of figures. Circle कितने हैं? Just 2. This and this 2 and totals are 7. So 2:7 again. Your answer. Now let's move to question number 4. It says the distances traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 kilometers and 12 kilometers. Fine. So find the ratio of the speed of Hamid to the speed of Akhtar. So अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना. So the ratio of Hamid to Akhtar is 9:2, or I can write it as 9/12
further reduced to 3/4. So 3:4 is my answer. So now it's question number 5. So it says that fill in the following blanks. So blanks दिए हुए हैं और हमें रेशियो कंपेयर करके हमें इनको बॉक्सेस को करना। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमें 15/18 दिया हुआ है और ये रेशियोज जो हैं कोई भी नंबर्स अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स हो सकते हैं, तो क्या करना हमें क्या करना है, 18 बड़ा नंबर है 6 से, इसको कंपेयर करते हैं। तो 6 की टेबल में कब आएगा 18? तो 6 टाइम्स व्हाट नंबर, ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 टाइम्स 3 इज 18। सो मुझे जो नंबर मैंने यहाँ यूज किया वही मुझे न्यूमरेटर में भी करना। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। नाउ आई गॉट दिस 3। सो 18 तो आ गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या होना चाहिए 15। तो 3 टाइम्स व्हाट will become 15, so it will be 5. So I've got my box as the 5. So now I've got this 5/6 is the ratio. Now what? This 5/6 is the smallest form of the fraction. So this is the reduced fraction. Now the second is 10 by something. So what will be this number? So if you can see this, there is a, that 10 is a multiple of 5 by multiplying 5 with 2. Okay, so I can rewrite this as 5 into 2. So if I'm multiplying 5 with 2, this 5 with 2, so 6 को भी मुझे 2 से ही करना होगा, the same number, ऊपर नीचे multiply. So this will become 12. So now this is also that. This is now 12. Okay, so you got this as 10 by 12. Now what? So the next one is some box divide by 30. तो हमें क्या करना है, 10/12 से नहीं करना, we'll go with the reduced fraction, सबसे lowest फॉर्म का। तो दिस इज 5/6, ठीक है। तो जब रिड्यूस वाला होता है ना, वहां से हमें कंपेयर करना होता है इनको। तो लेट्स चेक 5 times what will be this box, but I can't guess it here. So what I'm going to do, I'm guessing from the two given denominators. This is 6, this is 30. So when will I get 30? I'll multiply with 5. So it means मुझे ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो कैसे, मैंने 6 को 5 से किया तो 5 को भी 5 से करूंगी। So now this will become 25. Okay, so this becomes 25. Okay, so I hope this is clear. Okay, fine. So this is 5/6 and then 10/12 and this becomes 25/30. Okay, so the next question is question number 6. And question number 6 में हमें क्या करना है, find the ratio of the following. अब आपको 2 numbers दिए हैं, simply just divide them and get the ratio. So the first one is 81 to 108. So इस 2 का मतलब होता है ratio, ठीक है। So 81 लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 108. And simply जो first number होता है वो numerator and the second one is the denominator. And solve this. Since both of the numbers are the multiples of 9, so this is gonna be this, and I'm going to write as 3/4. Okay, so 3:4 is the ratio. The second one, 98 to 63. Again, 98 divided by 63, and these are the factors of 7. So 14 and 9. I don't think so that we can further simplify this. So 14:9 is the answer to it. So now 33 kilometers to 121 kilometers. So 33 in the numerator, 121 in the denominator. Use the table of 11 to simplify this, and this is your answer, 3:11. D part, so D part is 30 minutes to 45 minutes. So 30 minutes to 45. 30/45, and this becomes 10/15. Further, 2:3 is the ratio. Fine. Question number 7 is also find the ratio. So ratio we have to find, but in this question, you will see most of the questions, in most of the parts, the units are different. Minutes, hours, centimeter to meter, ml to liters, and paisa to 1. So now we have to convert this in a same unit. So first question, it says 30 minutes to 1.5 hours. 1 hour में 60 minutes. ठीक है, so 1.5 hour में कितने minutes बनेंगे? So this is 60 and half is 30, so 90 minutes. ठीक है, so now I have 30 is to 90 minutes. So दोनों units same हैं.
ठीक है. Now I can just say 1:3 is the ratio. Just divide it and get 1:3. The next part is 40 centimeter to 1.5 meter. 40 centimeters to 1.5 meters. So now 1 meter is equal to 100 centimeters. ठीक है. So 1.5 मतलब कि एक तो पूरा ही चाहिए 100 प्लस उसका आधा मतलब 50 मोर. So 150 centimeters are required in 1.5 meters. ठीक है. So now I can write in centimeters only 40 centimeter divided by 150 centimeters. Okay. So now just reduce this. So 4 by 15 is the ratio that I can write as 4:15 also. Okay. Okay. So the next part, C. So the C says 55 paise to 1 rupee. Okay. So in 1 rupee, you will get 100 paisa. Okay. So just simply convert this to 55 paisa to 100 paisa. So now you'll see the units are same. So 55 by 100 and just simplify this as 11:20. Okay. The part it says 500 ml to 2 liters. So you'll see that in 1 liter is equal to 1000 ml. ठीक है. तो 2 liters में कितने ml होंगे? 2000 ml. Now just put the values and divide 500 ml to 2000 ml. Okay. So it becomes, ऐसे काट लीजिए तो 1:4. तो इसका आंसर होगा 1:4. ठीक है.